Wait, yeah. Now. This is an India's compliance balance sheet of a TCS company, Tata Consultancy Services. As you know, in India, you don't know, but in India, firstly, asset side is covered in the balance sheet first, according to the liquidity or as per Schedule 3 Division 2. Like firstly, assets, non-current assets, and current assets. Then a difference is here also, like in equity and liabilities. Firstly, equity share capital. Then other equity means reserve and surplus, all that part. Reserve and related to reserve and surplus and other types of reserve. Let me show you like a component of other equity also. How other equity looks like. Reserve and surplus, items of OCI, revaluation reserve, cash flow hedging reserve. This is in investment revaluation reserve, many more things also, like specific economic zone, CRR, many more things also, but here only 6 types of reserves are there. Then cash flow, it's another difference. Like I was also talking in India's, in firstly talking in AS, like if you are issuing, if an entity is issuing preferential capital, that will directly show will reflect in share capital part, means that will comprise of equity and preference part, right? And in India's, in equity part, only the equity share capital will be there, or I can say that equity instrument particularly in, because here India's 32, 107 and 109 apply. That will learn in your CA final while doing CA final, but only equity share capital. And you know, like in India's preference share capital can be segregated into CF, that will be a compound financial instrument. And in that case, it will be segregated into 2 parts, equity instrument and financial liability. And you can see like equity instrument part will reflect here, and financial liability part will be in this 6 other financial liabilities, and that are also non-current. Maybe that can cover in current also, depending on the tenure. Let me check the 6H note if there is a preferential capital and others. No, here is this note, but you can see in the let me wait. Let me open Reliance. If I'm just only this, after this I will start the essay session also. Let me open the Reliance. You can search directly Google Reliance Annual Report 2021. Reliance Annual Report here 2021. Let me download. This is opening. Let me, like you can see, what can I share to you? Lease liability, fair value, hierarchy, foreign currency risk management. See equity instruments, like what I was saying, equity instruments. Reconciliation you have to do, opening balance, share existing buyback. Reliance company is comprising of that. Let me download this. Reliance, there is a link attached standalone directly to share borrowings of the financial liability non-current part. Where it is here, not financial, it's note 15, borrowings, deferred tax. ये देखो यहाँ पे you can see borrowings separately covered. No NCDs, they have not issued preferential capital. So let me check the equity part also once. See, preference share. No, this is authorized share capital. Sorry. Where is preference share there?
showing. Let wait. What you? Sorry, okay. There. That was the. Let me check preference share capital bonds, NCDs, non-convertible. If where it is shown now, other financially other payables, non-current. Let me search preference shares. Share. Okay, we have to search now. Where? Or maybe they have done unquoted preference share notes to. Oh, in consolidated it is. Sorry, not in standalone. They are authorized, but they have not issued. So like in NCD is also non-convertible debenture. It can also be classified into equity component and debt component. Some portion can be shown in equity and some portion will directly in this part. So okay, let's start discussing now practical thing. Let me close the Reliance balance sheet. Annual reports. So now let's start this. Now practical topic is going to start. F11 highlight. Okay, so like we have covered using of assertion and particularly assertion of relating to classes of transaction and events for the period. देखो मैंने लास्ट सेशन में सीधा बता देता हूँ कि देखो हमने लास्ट सेशन में किया था कि जो assertions होती है वो कहाँ अप्लाई होती है मेनली हमारी क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन पे, अकाउंट बैलेंसेस पे और डिस्क्लोजर पे. देखो ये रहा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल जहाँ जहाँ फॉल कर सकते हैं और उनके 3 कैटेगरीज हैं. फर्स्टली है क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन. सेकंड है क्या, रुको इसी के साथ में एक चीज तो मैं दिखाता रहता हूँ कि जैसे क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन उसके साथ देखो क्या लिख रखा है, इवेंट्स फॉर द पीरियड. एक चीज ये. नेक्स्ट क्या है, अकाउंट बैलेंसेस एट द पीरियड एंड. और assertions क्या है, देखो लास्ट में क्या, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. ये तो तुम्हें सीधा दिख प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. ये तो सीधा डिस्क्लोजर उनसे रिलेटेड बात कर रहा है कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है हमने. कि प्रेजेंटेशन जैसे ट्रेड पेपर्स का जैसे डिवीजन 2 में नया है कि इंडेक्स में अब स्केड्यूल भी शो करना है. फाइनेंशियल में एएस में भी आ चुका है और इंडेक्स में भी क्या हमें बैलेंस शीट में अपना वो भी नोट्स के अंदर अपना ट्रेड पेबल्स का, ट्रेड रिसीवेबल्स का अपना वो भी शो करना है. अदर्स का भी आया है लेकिन इनका शो करना है हमें. तो वो हो गया डिस्क्लोजर और कैसे प्रेजेंट करना है हमने. देखो हाँ, अब राधिका या सुजाता में से तुम दोनों में से बताओ कि जो क्लासेस और ट्रांजेक्शन यहाँ पे जैसे इवेंट फॉर द पीरियड एंड की बात कर रहा है, इवेंट्स फॉर द पीरियड, तो ये किसकी बात कर रहा है, पीएनएल और बैलेंस शीट. मतलब हम कौन सा बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड बनाते हैं एट द ईयर पीरियड एंड बनाते हैं हम. प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड. वॉइस मेरे को लो आ रही है या लो सबको आ रही है? लो 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 ओके. Radhika, okay, you are saying something, yeah? I'm saying that we make profit and loss for the period. Correct. We have to make profit and loss for the period. So देखो तुम इससे क्या मिलेगा कि जो क्लासेस और ट्रांजैक्शन की जो assertions हैं वो किस पे लगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स पे, क्योंकि इवेंट्स फॉर द पीरियड. और नेक्स्ट क्या है, assertion रिलेटिंग टू अकाउंट बैलेंसेस. और पीरियड एंड पे हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट स्पेसिफिकली. वो इंटरिम में हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. और इवेंट्स फॉर द पीरियड की बात करें, पीरियड भी अब कुछ भी हो सकता है, इंटरिम, क्वार्टरली, 6 मंथ्स, कुछ भी, क्वार्टर, एनुअल, कुछ भी हो सकता है वहां पे. तो लास्ट सेशन हमने अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी. अब देखो कट ऑफ था वो लास्ट में होता है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड का हमने डिस्कशन कर दी थी लास्ट में, बस थोड़ा वो रह गया था. और क्लासिफिकेशन सिंपल है कि हमें रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है, प्रॉपर अकाउंट्स के अंदर, बस ये है यहाँ पे. चलो अब राधिका और तुम में से अब कोई, चलो कोई भी बताना यहाँ से कि अब देखो बैलेंस शीट हम आइटम करते हैं पिक, ये रही अकाउंट बैलेंसेस, हम वो करना है. अब तुम बताओ, मैं तुम्हें बैलेंस शीट जैसे हमने टीसीएस की स्टार्ट की थी ना, पहले हमने उसमें डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस आइटम में से फाइनेंस कॉस्ट को.
कि उसकी हम एसेशन कैसे चेक करेंगे। तो अब तुम में से एसेट्स में से कोई भी एक पार्ट चुन लो। तुम्हारे पास ये बहुत यहाँ से लेके यहाँ तक कि मतलब ये एसेट्स पड़ी है यहाँ पे, कोई भी एक एसेट चूज कर लो कि हम उसकी कर सकें। मतलब ऐसे ही करना कि जैसे डेफर टैक्स, अभी इनको मत चूज करना क्योंकि ये डेफर टैक्स ये हम कंप्यूटेशन होती है, वो तो अलग टैक्स की बस वो टैक्सेबल डिफरेंस वो। कोई भी एक एसेट चूज, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ओके इन्वेस्टमेंट। ओके, चलो अब इन्वेस्टमेंट के वो करेंगे एसेशन के अकॉर्डिंग। चलो अब ये बताओ सबसे पहले हमारा एग्जिस्टेंस। अब तुम में से बिना देखे बताओ एग्जिस्टेंस में तुम क्या चेक करोगे। कि तुम्हारे पास अब ये इन्वेस्टमेंट पड़ी है मान लो, तो तुम इन्वेस्टमेंट के अंदर एग्जिस्टेंस में क्या चीज चेक करोगे बताओ। Existence means whether it is really have been done, मतलब whether we have really have an investment or not. It is really exist or not. रियली एग्जिस्ट और नॉट। Yes, yes. ओके राधिका। Yeah, भैया same. We will check the documents. First, The statement. directly you are checking the documents part. Or we can क्या बोलते हैं उसको? एम्प्लॉयज वगैरह से हम बात कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉय से बात करोगे तुम? मैनेजर से। मैनेजर से ठीक। फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, मेरे को करेक्ट वर्ड कोई ऑडिट के टर्म्स में यूज करो। डिपार्टमेंट। इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट you have to use the word, not you are not the ECWG. correct. Those are with governance or management. Directly you have to say management, or those are with governance, appropriate, or you can say appropriate level of management, and that appropriate can be with whomsoever that person. कि देखो अब किरण ने भी ज्वाइन किया, जैसे हम कर रहे थे बैलेंस शीट आइटम की, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। हमने पिक करके इन्वेस्टमेंट आइटम, जैसे उस दिन हमने फाइनेंस कॉस्ट की थी, आज हम करें इन्वेस्टमेंट आइटम को पिक कर रखा है। तो हम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एग्जिस्टेंस। तो बस एक बार किरण अब तुम बताओ तुम एग्जिस्टेंस में क्या चेक करोगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? या हेलो। या existence, investment. So I'm really sorry, हाँ call आ गया था and I'm actually about to have dinner also. So anyways, so comes to existence, whether it is in the name of the company or not, documents are properly record किए गए हैं या नहीं, फिर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सेग्रीगेशन अच्छे से दिखाना चाहिए, और whether the investments which are shown in the books of accounts whether they are valid or not, उसके टर्म कितने हैं, कब कौन सा एग्जिस्टेंस में तुम ये सारी चीजें चेक करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस इन द एग्जिस्टेंस assertion. या नहीं क्या? Are you sure? I think so. Sujata, anything else you wanna share? नहीं भैया, नहीं पता। Okay. We can do physical verification. No existence, no physical. देखो सीधी सी बात है, जैसे तुमने पॉइंट्स किया था कि नेचर ऑफ एंटिटी, और वो प्रैक्टिकली मतलब वो एग्जिस्ट करनी चाहिए वहां पे, कि जो भी तुमने जैसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट की है, अब तुमने इन्वेस्टमेंट करी भी, अब जैसे पर्टिकुलरली वहां पे हमने एसेट पिक की थी, वो तुमने इन्वेस्टमेंट करी थी। अब कोई पर्सन तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट कर भी सकता है, अब वो तुम्हारे लिए क्या शो होगी, वो क्लासिफिकेशन की पार्ट होगी वहां पे, कि हमने तो जैसे अब इन्वेस्टमेंट पिक किया है, तुम्हारे लिए एसेट्स है वो। तो देखो जैसे वो अदर लाइबिलिटीज इक्विटी की बात कर रहा है, तुम्हारा पर्टिकुलर अभी यहाँ पे ये एसेट्स का वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। सबसे पहले देखना कि एग्जिस्टेंस में है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट जैसे की थी, अब किसके अंदर की है, अब इक्विटी शेयर्स के अंदर की होगी, तुम क्या एग्जिस्टेंस पर्टिकुलर चेक करोगे वहां पे, मतलब कि अब तुम वही जैसे तुमने एग्रीमेंट्स उसके चेक कर सकते हो स्टार्टिंग में, बस खाली कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं वहां पे उनके एग्रीमेंट्स। चेकिंग आगे आएगा, वो हमारे नेक्स्ट में भी कवर होगा वहां पे। आगे रीड मत करना खुद कि साथ के साथ करोगे तो मतलब ऐसे फिर अच्छा नहीं लगेगा, मजे नहीं आएंगे उसमें। फिर जैसे फिर अब तुमने एग्जिस्टेंस चेक की, वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अब मैं जैसे यहाँ पे प्लांट पीपी की बात करता, तो वहां पे तुम उसकी एग्जिस्टेंस वहां
पर्टिकुलर उस फील्ड में जाके कर सकते थे। इन्वेंट्री की बात करता है, इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन जाके कर सकते थे। तो वो assertion है हमारी यहाँ पे कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अब ये जैसे तुमने कि वो कहा कि नेचर ऑफ एंटिटी के उसमें है कि नहीं, नेम ऑफ एंटिटी, वो एग्जिस्टेंस में क्या है, उससे तुम एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगी है कि नहीं असली में। मैंने बुक्स के अंदर दिखा रखा है, मेरे पास एग्रीमेंट है, एंटिटी के नेम में है। इन्वेस्टमेंट में तो अब डिपेंड करता है कि किसके अंदर तुमने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो चीज। क्या इन्वेस्टमेंट अब तुमने बिल्डिंग में करी हो सकती है, होटल में, किसी फील्ड में कर रखी हो सकती है, कोई भी हो सकता है वहाँ पे पर्टिकुलर केस, मतलब कोई भी डिपेंड करेगा वो। लेकिन मान लो जैसे तुमने कहा नेम ऑफ एंटिटी के अंदर है, अब नेम से तुम्हें दिख जाएगा कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग की है, अब वो तुम्हें दिखेगा कि बिल्डिंग वो बन रही है कि नहीं, जैसे कंस्ट्रक्शन वो हो रही है कि नहीं। अब तुम उससे कैसे देखोगी नेम ऑफ एंटिटी, मैंने तुम्हें एग्रीमेंट दिखा दिया उसका, लो चेक कर लो, नेम ऑफ एंटिटी है, बताओ। नाउ किरण, just through the agreement you will check Yes. just through the agreement you will check the existence that particular investment, or in the where the entity has invested his amount, if that exists or not, we will check just through by the agreement. No, we have to get confirmations as well, I guess, from third party whether it's valid correct. or not. करेक्ट। नाउ हमें सबसे पहले देखना है कि वो एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो दिखाने का कोई वो ही नहीं बनता, तो सीधा देखिए फेक शो कर रही है। लेकिन अब देखो एग्जिस्टेंस की बात, फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करोगे तो ऐसा नहीं होता कि तुम हर साल कर सकते हो, मतलब वो डिपेंड करता है कि एंटिटी अब तुम्हारा कैसा है। कि करना हो सकता है कि हमारी वो है कि ऑडिट प्रोसीजर है हमारा, कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होगी। लेकिन अब मैनेजमेंट के अब फिजिकल सिनेरियो की बात कर सकते हैं, जैसे कोविड का पीरियड था, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करोगे वहाँ पे और उनके जो भी प्लांट्स में जाके, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा वो केस। तो वहाँ फिर हम अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे उस केस में। लेकिन एग्जिस्ट हमें इवेल्यूशन इसकी वो लेनी है, हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हैं। वहाँ पे वीडियो कॉलिंग हमें करवा दो, वहाँ पे एग्जिस्ट करिए नहीं कर रही, कि हम प्रॉपर एक बार कोई सामने कोई टूल या फिर कोई हमारा पार्टनर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, कोई आर्टिकल जा सकते हैं वहाँ पे, वो डिपेंड हो सकता है कुछ भी। नेक्स्ट आ गया हमारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इसमें बताओ तुम क्या चेक करोगे। जो भी आना चाहे अपना पहले स्टार्टिंग में खुद अपना शेयर कर सकता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा उसको। Whether the entity has the ownership, has the right over the investments or not, whether it is registered in Right. the name of the entity or not. कैसे चेक करोगे? We'll check the agreement, check the Okay, you will agreement check. in which name will be. Yes. Just through the agreement you will check the rights and Uh, obligations. Right. We will have to check whether he can do, matlab he can sell out the property or not, matlab he has to be proper ownership of that. Okay, anyone else? Radhika, Kiran, Sujata, anyone? Whether it is in the name of company, how will you assess that, whether it's in the name of company or not? सुजाता, हाँ भैया, हाँ तो बताओ वही तुम। डॉक्यूमेंट्स, बोलो। हाँ वही डॉक्यूमेंट्स ही चेक कर सकते हैं ना, मतलब उसके लिए और मतलब क्या चेक करोगे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं में? कर, डॉक्यूमेंट्स में क्या चेक करोगे? मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट किया है तो उसी का रहेगा ना, कि मतलब उसी में इन्वेस्ट किया बोल के ऐसा एग्रीमेंट वगैरह उनके पास। उससे रिलेटेड क्या क्या चेक करोगे एग्रीमेंट में, बताना ब्रीफ में कुछ बताओ, क्या उससे क्या पॉइंट्स चेक करोगी? मतलब जैसे कि बिल्डिंग्स में हम लोग इन्वेस्ट किया टाइप का, तो मतलब उसी का एग्रीमेंट बना होगा कि मतलब ये वाली बिल्डिंग पे, मतलब ये वाली Okay. कंपनी ने ये क्या हाँ। अमाउंट वगैरह या फिर जो भी उसका, तो वही बोल रही थी।
बस इसे हो गया खत्म. नहीं Only this much. और क्या कर सकते हैं, नहीं पता उतना, मतलब ज्यादा. What you say? Inquiring TCWG. If we have invested in share certificate. Okay. What more you will check in the agreement part now? Tell me about something over that that. it should not be a like ki high purchase system or ki Huh? that Higher purchase means system. means ownership percentage, investment percentage, हाँ. whether it's holding, whether it's subsidiary, whether it's just have 2% share, whether it's have holding of that. What I'm saying, oh my god. बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की है या शेयर सर्टिफिकेट, चलो शेयर्स में किया है उस केस में मान सकता हूँ, लेकिन बिल्डिंग में अगर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे हम बिल्डिंग का केस ले रहे थे, उससे पहले तो अपना केस क्लियर करो कि किसके अंदर कह रहे हो. जैसे तुम इक्विटी शेयर के अंदर कह रहे हो, तो वहां फिर हो सकता है कि सब्सिडरी का तुम वहां चेक कर सकते हो कि सब्सिडरी और वो पेरेंट का वो होल्डिंग, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी का बन रहा है कि नहीं बन रहा वहां पे. क्योंकि अगर होल्डिंग सब्सिडरी का बन रहा है, अगर पेरेंट कंपनी को इंडिया से एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो सब्सिडरी के भी होंगे, फिर CFS होगी, अदर इंडिया सप्लाई होगी, मतलब इंडिया से जो भी एस जो भी अप्लाई होंगे वहां उस केस में, तो ये चेक कर सकते हो. करेक्ट. और क्या करोगे? व्हाट एल्स? We can also check whether they have paid proper amount of that means consideration. पेड. Pay or paid means whatever they पे have और to. पेड. Rendered. रेंडर्ड. व्हाट रेंडर्ड? Rendered is for service. No, rendered nahi. They have oh my god, English word. Invest. इन्वेस्ट. नाउ राधिका, what you are saying now? Invest in what? In what No, context you are saying? I'm just correcting the word he's saying, pay or paid or Now rendered. you continue. I'm just saying that he is saying that the company should pay, the company should invest. Investment is already done, then how will you check by through the agreement part? Just focusing on that part now. It is just being clear that you will check the agreement part and name of the entity, inquiring the TCWG. Now, particularly in the agreement, what the consideration that you will check? I'm saying that. Basically, the amount that the company has invested over the asset has right over that thing or not. Ki Mudit is saying that point ki if he has invested 2% or 3%, so that should be clearly mentioned. Ki if the company has invested the amount of 2%, so the company should have right over that 2%. We have to check that. Okay. Just only this two things you can check through the agreement. Or Broaden your mind. Try to. okay, I will. Kiran. I'm trying. Kiran, what will you check in the agreement? Kiran has now nothing to say. No one else is going to think, or are you trying? Should I wait? No, Bhaiya, you should say. No, directly. एग्रीमेंट में क्या क्या चीज कंडीशन चेक करोगे वो अब मैं बताता हूं, रुको. अब एग्रीमेंट में तुम क्या क्या कंडीशन चेक कर सकती हो. अगर इन जो इन्वेस्टमेंट तुमने, जैसे लाइक यू इन्वेस्टमेंट, like you are getting it's mentioned that you will get something in return or not, return on that particular part. How will you get that particularly? Like you can In invest cash. in something debentures, like investment in the debentures of other company, then you will get the interest on that part.
or if you are investing in building, then what other consideration you will get through that? Rent Or like if you can some take your part outside earlier before the period, then what are the consideration that will be applicable in that case? What are the more consideration that in the case of penalty, that particular how much penalty will be decided, how the penalty clause will be applicable in that case? What are the parties that you mentioned already? Amount, stake percentage, return, you can say. If entity has to make a continuous amount of investment in the future also, then if that's mentioned in the agreement or not. So like if an entity has to make a investment in a particular intervals, then you can all that check that part also. Something like this was relating to the asset part. Like if this is a liability part, then this obligation will also trigger to pay interest, to pay that repayment of the principal part. Then that can be also the case. If I take the liability part also, then that obligation will trigger, your obligation may trigger in that case. So that's the consideration, or particularly you have to go through the agreement thoroughly. Like what are the consideration mentioned in that case? If you are doing the stat audit, then you have to quickly go through the agreement. Or if that you can check deeply also, like if there are less number of investment also, then you can particularly check deeply in that agreement what are the consideration. Because in India, like I have also mentioned, that if you are invested in debenture, then what's if we have to apply India's 32109 in that case, then how the segregation of that part will be there into that part or equity part, how will that be classified? That you have to properly classify. Because in India, if you have make any error, then after if you have to rectify any error in the subsequent period, in that case you have to reopen your books of that period particularly. Not you have to just you can show in the current period with the error we have to do in the AS part. In India's the retrospective effective we have to give. Join for other session for 10 minutes. Meeting time is getting closer. We have to do 2 other assertion, completeness and valuation. Quickly join just after that, same link.